Keep joining students quickly. All right. Let's start with first slide. Someone please read. A reflexive pronoun is a special kind of pronoun that is usually used when the object of a sentence is the same as the subject. Each personal pronoun, such as I, you, and she, has its own reflexive form. I, myself, you, yourself, etc. Example, I accidentally cut myself with a knife. Here are the person doing the action. The subject is the same as the person receiving the action. The object. Reflexive pronouns point back to the subject of the sentence. In the given sentence, myself is a reflexive pronoun. All right, guys. So रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये एक स्पेशल काइंड के प्रोनाउन होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम यूज करते हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउन में सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्रोनाउन आते हैं, बट ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, I accidentally cut myself with a knife. So यहाँ पे I क्या है? सब्जेक्ट है. मैंने अपने आप को गलती से नाइफ से काट लिया. फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग समथिंग विद अ नाइफ, आपका हाथ कट जाता है, तो ऑब्वियसली आप किसी और पे तो ब्लेम करेंगे नहीं ना कि उसने काट दिया मेरा हाथ. आप क्या बोलोगे? एक्सीडेंटली मुझसे मेरा हाथ कट गया. तो जो काम सब्जेक्ट खुद करता है उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन से बना है. रिफ्लेक्शन का रूट है. सो रिफ्लेक्शन मींस परछाई. तो अगर आप धूप में खड़े होंगे तो आपको किसकी परछाई दिखेगी? अपनी ही. ऐसे ही जो आप काम करोगे उससे क्या रिजल्ट होगा वहां आप खुद ही अपने लिए ही बात करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सीडेंटली कट माई सेल्फ विद अ नाइफ. सो माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ओके. नेक्स्ट, हियर द पर्सन डूइंग द एक्शन, द सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, इज द सेम एज द पर्सन रिसीविंग द एक्शन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन करता है वो ही एक्शन को रिसीव करता है. राइट. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पॉइंट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. Okay, in the given sentence, myself is a reflexive pronoun. Any confusion? Yogita, you are raising your hand. No, ma'am, by mistake. By mistake. Okay, moving to the next slide. Now we have examples of reflexive pronouns. यहाँ पे भी guys first person, second person, third person जैसे मैंने कल समझाया था वही रहेगा. So first person singular myself, second person singular yourself, third person singular he के लिए himself, she के लिए herself, it के लिए itself. ठीक है. अब आते हैं प्लूरल्स पे. सो गाइस एक चीज आपको ध्यान देनी है कि सिंगुलर्स के साथ वी ऑलवेज यूज सेल्फ, SELF, बट व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, जैसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, आर सेल्व्स, SELVES. अब आप माई सेल्फ नहीं लगा सकते और योर सेल्फ नहीं लगा, मतलब प्लूरल के लिए नहीं लगा सकते. आर सेल्फ नहीं लगा सकते. ठीक है. सो आर सेल्व्स, SELVES, ourselves. Next, yourselves plural के लिए. Themselves third person plural, they की जगह हम क्या लगा रहे हैं? Themselves. Easy. For example, he cut himself while chopping vegetables. For example, I'm talking about my brother. My brother, he cut himself while chopping vegetables. वो सब्जियां काटते हुए उन्होंने अपने आप को कट कर लिया. She looked at herself in the mirror. So उसने खुद को शीशे में देखा. She looked at herself in the mirror. So herself क्या है? Third person singular. Myself, yourself, himself, herself, itself, ये हो गए हमारे singular. Plural में आ गए ourselves, yourselves, themselves. So there are 7 reflexive pronouns. Easy. Any questions? You too, Amjad. Good afternoon. No? All good? Anjali, you are raising your hand.
गाइस ये हैंड रेज करे तो क्वेश्चन भी तो होना चाहिए ना. Ma'am, they were checking the option. How this option works. अरे they know, they take my evening session. Anjali, do you have any question? oneself madam, oneself वन सेल्फ. अंजलि वन सेल्फ यूज होता है एक इंसान के लिए. इस इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए. अ पर्सन शुड वर्क. जैसे हम हिमसेल्फ नहीं यूज करना चाहते क्योंकि हमें नहीं पता वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल. ठीक है, अब हम इंसान का यूज कर रहे हैं तो वन सेल्फ. तो वहां पे हम वन सेल्फ यूज करते हैं. ऑल्दो इट्स नॉट दैट कॉमन बट यूज में आ सकता है वन सेल्फ. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन गाइज? No, all good. All right, let's move to the next slide. Someone please read. Ma'am, Yes, Krishna. we use a reflexive pronoun as a direct or indirect object when the direct or indirect object is the same as the subject of the verb. Example: be careful with that knife. You might cut yourself. Here, yourself is the direct object which could get cut. Would you like to pour yourself a drink? Here, the direct object is drink as it is getting poured, and yourself is indirect object. They had to cook for themselves. Themselves is the object of the preposition for. Okay. So guys, we use a reflexive pronoun as a direct or indirect object. अब direct और indirect object क्या होते हैं? ठीक है. So who will tell me? May I say, ma'am? Yes. Direct object means when you directly point to something. 1 minute, ma'am. Direct object actually says what the verb. 1 minute, ma'am. I need to think. Array? It's okay. So guys, direct object means it is very simple when you directly point to the object. For example, अगर मैं बोलूँ this is my bag, तो मैं बैग पे डायरेक्टली पॉइंट कर रही हूँ. ठीक है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब मैं किसी के थ्रू बोल रही हूँ प्लीज टेल हिम डू नॉट टच माय बैग, सो प्लीज टेल हिम, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बिकॉज मैं किसी और के थ्रू से बात कर रही हूँ. सो direct or indirect object is the same as the subject of the verb. For example, be careful with that knife, you might cut yourself. Here yourself is the direct object. मैं directly बोल रही हूँ. ठीक है. Indirect क्या होगा? मैं आपकी मम्मी से बोलूँ कि अपनी बेटे से बोलूँ कि ध्यान से सब्जियां काटे, उसका हाथ कट जाएगा, तो ये indirect object हो गया. Okay. So would you like to pour yourself a drink? Would you like to have a drink? तो यहाँ पे भी ये direct object है because मैं सीधा आपसे पूछ रही हूँ. ठीक है. Now next we have यहाँ पे here the direct object is drink as it getting poured and yourself is the indirect object. Yourself क्या है? Indirect object. Would you like to pour yourself a drink? ठीक है. They had to cook for themselves. उन्हें खुद का खाना पकाना पड़ता था या खुद से खाना पकाना पड़ता था. Themselves is the object of the preposition for. किसके लिए? For का मतलब होता है के लिए. So they had to cook for their family, for themselves, for their friends, for their teachers. Okay, so ये preposition हमें object दे रहा है. Easy? Kartik, you are raising your hand. Now can you give me 1 minute, ma'am? Go ahead. I'll say about direct and indirect object. Actually, ma'am, direct object is the object which receives the action of the verb directly. For example, in the sentence, David is eating a sandwich. Here, if we want to know what is a direct object in this sentence, David is eating a sandwich, we can ask like what or whom to the verb. Means like David is eating what? The answer is the direct object. David is eating a sandwich.